Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Sarah Khan, your instructor for the subject of application of statistics in psychology. In the previous lecture, we have learned about central tendency, mean, and median. Today, we will focus on the third method of finding central tendency from the given set of data is the mode. Before learning about the mode, let's revise concepts of central tendency, mean, and median. Central tendency, as we have learnt before, uh, as the name indicates, the center of something. This something in statistics is the data. Data which we have collected during gathering information from the sample, and central tendency is the single value which represent the whole or the large set of data. Central tendency is the descriptive summary of the data set, because we use the measure the single value of the central tendency to describe the data set, to describe the properties of the data set. Only the single value provides this descriptive summary. When we want to compare two or more set of data, uh, the condensation of the data and the frequency distribution and the graphical representation of the data is not enough. It is necessary to summarize the data set in a single value. And this single value is called the central tendency of the data set. To calculate the central tendency of any data set, there should be some objective and well-defined procedures so that the other researchers can understand and duplicate the procedure. There are three methods usually used in psychology to find the central tendency of any data set. First one is arithmetic mean, and the second is median, and third is the mode. Arithmetic mean is the simplest and the most widely used measure of central tendency. To calculate the simple average, it's also called the simple average. To calculate the arithmetic mean, we add up all the entire numbers or the entities given in the data set, and then divide it by the total frequency of the given the people. And the median is the single value which divide the data set into two equal parts. Median determine the middle value of the data set listed in ascending order. This value divides the lower half from the highest half of the data set. It's the middlemost value of an arranged data set from the smaller value to the largest value. Today we will discuss the mode. Mode is the most frequent value in the data set. Mode is defined as the most frequently occurring category or score in the distribution. In a frequency distribution graph, the mode is the category or the score
corresponding to the peak or the high point of the distribution. The mode can be determined by data measured on any scale of the measurement, uh, nominal, ordinal, interval, or the ratio scale. The primary value of the mode is that it is the only measure of central tendency that can be used for the data measured on nominal scale. अभी तक हमने दो जो मेथड पढ़े हैं विच इज़ मीन एंड द मीडियन. नॉमिनल डाटा से मीन जो है वो हम नहीं मालूम कर सकते. अगर हमारे पास डेटा नॉमिनल स्केल में है तो हम नॉमिनल स्केल का की से अगर कोई सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करनी है तो वो हम मीन और मीडियन से मालूम नहीं कर सकते. मॉड जो है वो सिर्फ एक वाहद मेथड है टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा सेट, जिससे हम अगर हमारे पास डेटा नॉमिनल स्केल पर है तो हम उस नॉमिनल स्केल पर भी जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर सकते हैं मॉड के थ्रू. और अगर हमने मीन और मीडियन मालूम किया है तो हम मॉड को सप्लीमेंटल मेजर के तौर पर भी हम इसको रिपोर्ट करते हैं. Bimodal distributions, it is possible for the distribution to have more than one mode. Such a distribution is called bimodal. Note that the distribution can have only one mean and only one median. अगर हमारे डेटा सेट के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू एक से ज़्यादा है तो उसके एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं. सिंगल वैल्यू ही नहीं हो सकती इस मॉड की, बल्कि 2 या 3 वैल्यू भी हो सकती हैं. लेकिन मीन एक सिंगल वैल्यू है और मीडियन भी एक सिंगल वैल्यू ही है ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. In addition, the term mode is often used to describe the peak in the distribution that is not really the highest point. Thus, a distribution may have a major mode at the highest peak and a minor mode at the secondary peak in the different locations. हमने अगर अनग्रुप डेटा से मोड मालूम करना है तो उसका बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है. स्टेप 1, अरेंज द डेटा वैल्यू आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. स्टेप 2, आइडेंटिफाई द रिपीटेड वैल्यूज एंड फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी. यानी अगर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं तो उन वैल्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ उसकी वो कितनी दफ़ा आई हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें आइडेंटिफाई करनी है. ऐसा करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा सेट में आई है. The observation with the highest frequency will be the mode of the given data. Consider marks obtained by 10 students in a science test as given below. 45, 66, 98, 53, 40, 42, 30, 88, 45, 30. टू सेव टाइम वी विल ऑर्गेनाइज. अगर हम इसी तरह से ऑर्गेनाइज किए बगैर अगर हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो रिपीट हुई है या कोई रिपीट हुई भी है कि नहीं हुई, थोड़ा सा मुश्किल काम है. हो तो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है, टाइम ज़्यादा लगता है, हो जाता है. टू सेव टाइम वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. When we arrange the data in ascending or descending order, then we find the
values which are repeated in the data set. Here in this example, 45 is repeated once again in the data set. So the 45 will be the mode of this data set. ग्रुप डेटा से मोड मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत होती है. mod is equal to L. L is the lower limit. Okay जी, L lower class boundary of the model class. Lower limit या lower boundary of the model class which we select in our example. We will solve this. We will solve the mod from the group data in the next example. In this formula, Fm is the frequency of the model class. Model class will be the class which have the maximum frequency. F1 frequency preceding the model class frequency, and F2 is the frequency following the model class frequency, and H is the height or the size of the class model class. Okay. This is an example. The weights of 50 college students are given in the following table. Find the mode of the distribution. This is the data set, and this is the frequency, number of the students. First of all, we will find the class boundaries. There are two formulas, the formula of median and the formula of mode from the group data. Both formulas have the L is the lower limit of the selected class or the model class. In these two formulas, we use the lower limit, and this lower limit will be from the class boundaries, not from the class intervals or the class intervals, which are not similar, whose upper limit is not similar with the lower limit. First of all, we find the class boundaries. To finding the class boundaries, the method is the same as the previous in the median. We will minus 0.5 from the lower limit and add 0.5 in the upper limit, and we will complete this column, and we find class boundaries from all class intervals. After it, we will search in this column, which is the frequency column, which is the most highest frequency. Most highest frequency is the 16. We will select this model class. We will use the lower limit of this model class and the frequency of this model class. This will be Fm, maximum frequency, and this 9 will be F1, and this 12 will be F2. We will put all these values in the given formula, in this formula. Lower limit is 69.5 plus Fm is 16 and F1 is 9. Then again Fm is 16 minus F1, then sign of plus,
FM is 16 and F2 is 12 into height of class is, size of class interval size is 5. We will calculate, first of all, we will 16 minus 9 will be 7. इनको भी हम एक दूसरे से माइनस करके 7 प्लस 4 आ जाएगा, और इसको हम इस पर डिवाइड करके 7 को 11 पे डिवाइड करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो भी हमारे पास आएगा उसे हम लोअर लिमिट में प्लस कर देंगे। तो लोअर लिमिट में जब हम उसे प्लस कर देंगे तो वो 72.68 हो जाएगा। दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट। बस समझने वाली बात यही है कि हमने कोई मज़ीद कैलकुलेशन हमने नहीं करनी होती, यानी मज़ीद कोई कॉलम हमने नहीं बनाना होता, ना किसी f को x से हमने मल्टीप्लाई करना है, ना ही हमने कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। हमें जो भी डेटा सेट दिया हुआ है सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ठीक है। यानी इसकी जो एक क्लास की अपर लिमिट है वो दूसरी नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सेम है या नहीं। अगर ऐसे नहीं है तो हम 0.5 जो है वो इसमें से माइनस करेंगे और लोअर लिमिट में से, और 0.5 जो है वो अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये क्लास बाउंड्रीज वाला पूरा कॉलम हम कंप्लीट कर लेंगे, और इतना ही है, कोई और कॉलम इसमें नहीं बनना। सिर्फ इसके बाद हमने ये नोटिस करना है, ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है। जिस भी क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी क्लास की लोअर लिमिट हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। उस क्लास से पीछे वाली जो क्लास है वो हमारी F1 होगी, और उस क्लास से जो अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 होगी, ठीक है। यानी ज़्यादातर इसमें फ्रीक्वेंसीज ही इस्तेमाल हुई हैं सारी की सारी, और सिलेक्टेड क्लास की लोअर लिमिट इस्तेमाल हुई है। हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इस फार्मूला में पुट करेंगे, और इससे हम सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करके जो एक वैल्यू हमारे पास आएगी वो इस डेटा सेट का मॉड होगी। हमने रिलेशनशिप देखना है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो ये रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मॉड का फार्मूला के हिसाब से। अभी हम इसका एम्पिरिकल रिलेशनशिप भी देखेंगे। अगर हमारे पास मीन है और मॉड भी हमारे पास है, तो उससे हम उसको अगर हम आपस में माइनस करते हैं और मीन और मीडियन को माइनस करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसी तरह से 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये भी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। Now the empirical relationship between mean, median and mode, because mean, median and the mode all are measuring center tendency. The three measures are often systematically related to each other. In a symmetrical distribution, for example, the mean and the median will always be equal, and also the mode. Mean will be equal to median and median will be equal to mode.
In a symmetrical distribution has only one mode if the mode mean and the median will be have the same value. If a symmetrical distribution have more than one, then the cases will be different. In a secured distribution, the mode will be located at the peak on one side, and mean usually will be displaced toward the tail. On the other side, the median is usually located between the mean and the mode. ये भी हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि ये क्या है, यानी अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड है, बेशक वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है, तो मोड जो है वो लोकेटेड होगा पीक पर ऑन वन साइड, और जो मीन है यूजुअली डिस्प्लेस्ड होगा टुवर्ड्स द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और मीडियन जो है वो इन दोनों के दरमियान में होगा। यानी अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे कि इसमें जाहिर है ये हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। और अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड है तो मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मीडियन की वैल्यू उससे छोटी और मॉड की उससे छोटी। और इसी तरह से अगर नेगेटिवली सिक्योर्ड है तो मीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मीडियन होगा, और मॉड जो है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है जी, यानी in case of the positively secured frequency distribution curve, mean will be greater than median and median will be greater than the mode. In the case of negatively secured frequency distribution, mean will be smaller than the median and median is smaller than the mode. अभी हमने ये भी कहा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिक्योर्ड है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो जो मॉड होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन की पीक पर होगा। ये देखें, इधर भी पीक पर है और इधर भी पीक पर है। ठीक है, ये यहाँ वैल्यू होती है। जो डेटा सेट होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हम उसको रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाई एक्सिस है। तो मीडियन जो है हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मॉड और मीन के दरमियान में होता है हमेशा। ये देखिए इधर भी इन सिक्योर्ड, बेशक वो नेगेटिवली है बेशक वो पॉजिटिवली है, तो मीडियन जो है वो दोनों के दरमियान में रहेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड है तो मीन हायर होगा, और अगर नेगेटिवली सिक्योर्ड है तो मीन सबसे लोअर होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, जो कि कंटिन्यूड पार्ट था प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने स्टैंडर्ड टेंडेंसी को समझा और उसके बाद मीन और मीडियन को समझा। आज हमने जो पार्ट कवर किया है ऑफ दैट लेक्चर इज़ द मोड। मोड को हमने देखा है कि किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, बेशक वो कोई ऑर्डिनल स्केल पर है, नॉमिनल स्केल पर है, इंटरवल पर है या रेशो स्केल पर है। किसी भी स्केल पर डेटा सेट को हम उसका मोड मालूम कर सकते हैं। मोड हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी में 2 मोड हैं तो हम उसे बाई मॉडल कहते हैं। और कोई डाटा सेट ऐसा भी हो सकता है अगर वो अनग्रुप डेटा है तो कि उसमें कोई भी जो वैल्यू है वो रिपीट ना हो, तो वो जो डेटा सेट है वो विदाउट मोड होगा अनग्रुप डाटा में। अगर उसी डेटा का हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर ऑब्वियसली काम करेंगे तो हर एक के सामने एक जो है वो जो अभी जो हमने एक तरीका
सीखा है ग्रुप डेटा से मालूम करने का, तो हम उस तरह से उसका मॉड मालूम कर सकते हैं। मॉड को समझने के बाद हमने जो अ, हमने देखा कि रिलेशनशिप क्या है, फार्मूला का रिलेशनशिप क्या है आपस में मीन, मीडियन और मॉड का, और उनका जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो क्या है। और फार्मूला हमने देखा कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। और जो हमने एम्पिरिकल रिलेशनशिप देखा वो था बिटवीन मीडियन एंड मॉड, मीन, मीडियन एंड मॉड। वो हमने देखा कि अगर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन एंड मॉड जो है वो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, एक ही वैल्यू होगी उनकी, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे एक्स एक्सिस पर, यानी उनकी एक ही वैल्यू होगी। लेकिन अगर नेगेटिवली सिक्योर्ड डाटा है तो मॉड की वैल्यू अलग होगी, मीडियन की वैल्यू अलग होगी, और मीन की वैल्यू जो है वो डाटा सेट में अलग होगी। मीन जो है वो मीन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, मीडियन की वैल्यू उससे थोड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, और मॉड जो है वो सबसे बड़ा होगा। इसी तरह से अगर पॉजिटिवली सिक्योर्ड डेटा है तो मीन की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और मीडियन की जो वैल्यू है वो उससे कम होगी, और मॉड की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी। So we have learned 3 methods of finding central tendency: mean, median and mode. These are some references. These are the books and these are the websites from where I took some data, and you can also take help from these books. Next lecture will be about the availability of the data, which is also the descriptive statistics of the given data set. Okay.